Today we will continue with our part number 3 regarding the chapter that is the life processes, and this chapter is from the biology part, especially for the class 10th. तो इससे पहले प्यारे बच्चों हमने इसी चैप्टर से रिलेटेड लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कर लिए हैं, और आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें हमने जो स्पेशली जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो किए थे लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड, उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है और वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस क्या रहे हैं उसमें, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो किस तरह से टेक प्लेस करता है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा बेटे, दैट इज रिलेटेड with the significance of photosynthesis, and the chapter is life processes. And remember one thing beta, this syllabus is common for all the boards, either the CBSE board or the state board. तो ये हमारा life processes chapter है बेटे, and this chapter is from the biology part, and today we will continue with our part number 3. कुछ इसमें हम लर्निंग प्लस पॉइंट भी पढ़ेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 1 और 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज जो हम शुरू करेंगे बेटे, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Significance of photosynthesis. Photosynthesis is the process by which the green plants prepare their own food in the presence of sunlight in the form of raw materials such as carbon dioxide and water, and that process is known as photosynthesis. And this is the topic that is to be already we have discussed in our previous lecture. तो अब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है बेटे। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस by which the green plants prepare their own food themselves in the presence of sunlight, in the presence of sunlight, such as carbon dioxide and water. That is the raw material, carbon dioxide and water. So this is the process of the photosynthesis. Suppose बेटे photosynthesis की process में आपने देखा होगा कि जो green plants होते हैं, they can prepare their own food themselves, especially in the presence of sunlight as well as the chlorophyll in the form of raw materials such as carbon dioxide and water, and after that they forms the carbohydrate. Carbon dioxide plus अगर हम water को react करते हैं, after that there is a formation of carbohydrate. So this is the process of photosynthesis. तो यहाँ देख सकते हैं बेटे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इस तरह से होता है। अब हम सिग्निफिकेंस देखेंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट जो हमारी सिग्निफिकेंस है बेटा, दैट इज रिलेटेड विद द फूड। हाउ द प्लांट्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। So photosynthesis is the only process by which the green plants prepare their own food themselves in the presence of sunlight, and after that they form their food in the form of carbon dioxide and water, and when carbon dioxide and water they react with each other, after that they form the carbohydrate, जो कि मैंने already लिख दिया है। So photosynthesis, green plants synthesize food from the simpler. In the process of photosynthesis, green plants synthesize
green plants synthesize their food by raw material such as carbon dioxide and water. नोट कर सकते हैं बेटे इसको, such as carbon dioxide and water. Thus it sustains life on earth. Thus it sustains synthesize thus it sustains life on earth. So this is the first significance that is related with the process of the photosynthesis, and here the first significance is food. So in the process of photosynthesis, green plants synthesize their own food with the help of the raw materials such as carbon dioxide and water in the form of carbohydrates. So that's why thus it sustains life on the earth. So here it is the first significance that is related with the process of the photosynthesis. अब next जो हमारा main जो हमारी importance है बेटा related with the process of the photosynthesis, that is oxygen. Oxygen क्या role play करता है बेटे? Oxygen released during the process of photosynthesis. Everybody knows about that during the process of the photosynthesis, oxygen is released during the process of photosynthesis, क्योंकि जो oxygen का process है वो release होता है during the process of the photosynthesis, and that oxygen is needed by the animals and the human beings. Everybody knows that जो हम oxygen inhale करते हैं, that is to be released by the plants, and the carbon dioxide that is to be exhaled by the animals as well as the human beings, that is to be inhaled by the plants. So oxygen that is to be released during the process of the photosynthesis by the plants, after that oxygen is to be used by the animals and the human beings. तो ये जो oxygen होती है इसको कौन यूज करता है फिर? Animals and the human beings. It also required for the respiration of microbes. चलो हम पहले लिख लेते हैं. Oxygen is to be released. Oxygen is to be released during the process of photosynthesis. Photosynthesis by the plants, and after that it is to be used, and after that it is to be used, it is to be used by the animals and human beings. Animals and human beings. आप इसको नोट कर सकते हैं बेटा. ये second important significance है that is related with the process of the oxygen, and it is also required for the respiration of microbes. It is also required. It is also required for the respiration of microbes. For the respiration of
microbes. So this is the second significance that is related with the process of the photosynthesis. And oxygen also supports the combustion of fuel. It is also again important. Oxygen is also supports combustion of fuel. It also supports combustion of fuel. It also supports combustion of fuel. So this is the second importance or the significance that is related with the process of the photosynthesis. So beta, as all we know that the process of the photosynthesis, it also plays an important role in the process of the oxygen. And how the process of the photosynthesis, it plays an important role in the process of the oxygen. Everybody knows that whatever the oxygen that is to be exhaled by the animals as well as the human beings, and after that not oxygen but carbon dioxide. Everybody knows that carbon dioxide that is to be exhaled by the animals as well as the human beings. After that carbon dioxide is to be inhaled by the plants, and whatever the oxygen that is to be exhaled by the plants, that oxygen is to be inhaled by the animals and the human beings, and that is only done by the process of the photosynthesis. So ऑक्सीजन इज टू बी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो ऑक्सीजन का प्रोसेस है उसमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एंड दैट ऑक्सीजन इज टू बी रिलीज्ड बाय द प्लांट्स, and after that oxygen is to be used by the animals and the human beings. अगर plants ऑक्सीजन को नहीं छोड़ते हैं तो animals और human beings जो होंगे वो ऑक्सीजन को inhale नहीं कर सकते हैं. That is only done by the process of the photosynthesis, and after that oxygen is to be exhaled by the plants. And it is also required for the respiration of microbes. जितने भी microbes हैं उनकी respiration के process के लिए ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत necessity है. So it is also required for the process of the respiration of the microbes, and oxygen also supports the combustion of fuel. कभी भी आप देखें अगर आप आग लगाते हैं या जलाते हैं तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो फायर जो होगा या फ्यूल जो होगा वो बर्न नहीं होगा. तो उसके लिए क्या है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग या फॉर द कंबर्शन ऑफ फ्यूल. अब जैसे सपोज करो आप मोमबत्ती जगा रहे हैं, कैंडल जलाया है, तो अगर आप उसको खुले में रखते हैं तो इट इजिली कैचेस फायर, वो इजिली कैच फायर कर लेगा, बर्न कर जाएगा. बट व्हेन वी उसके ऊपर अगर हम किसी गिलास के जार को उस कैंडल के ऊपर ढक कर रख दें तो आफ्टर सम टाइम्स दैट कैंडल जो होगा वो बर्निंग करना स्टॉप कर देगा. सो दैट्स वाई कंबर्शन के लिए जो है वो ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है. सो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंबर्शन ऑफ फ्यूल. तो ये बेटा हमारा सेकंड सिग्निफिकेंस हो गया कंबर्शन ऑफ फ्यूल का. नेक्स्ट हमारा आता है कि फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल फ्यूल्स. जैसे नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूल. फॉसिल फ्यूल्स like coal, fossil fuels like coal, oil and natural gas. Oil and natural gas. So these are the fuels such as coal, oil, natural gas इसको हम क्या करते हैं बेटे, फॉसिल फ्यूल्स हैं. जैसे कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स हैं यहाँ लिखिए हमने आपके. ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, आर फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी. आर फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी.
नोट कर सकते हैं बेटे आप इसको। नेक्स्ट हमारा सिग्निफिकेंस जो है दैट इज रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड synthesized by photosynthesis millions of years ago. Synthesized by photosynthesis millions of years ago. So these are the three important significances that related with the process of the photosynthesis जो हमने पहले पढ़ी थी बेटे, that is food, कि how the plants they can prepare their own food themselves in by the process of the photosynthesis in the presence of sunlight and in the form of raw materials such as carbon dioxide and water, and after that there is a formation of carbohydrate. And second important significance of photosynthesis is related with oxygen, and oxygen is to be released during the process of the photosynthesis by the plants, and that oxygen is to be inhaled by the animals and the human beings. So this is the most important process, and it is also required for the respiration of the microbes, and after that oxygen also supports the combustion of the fuel. Without oxygen, combustion of fuel or burning of fuel is not possible. And the last important significance of the photosynthesis, that is the fuel, fossil fuels like coal, oil and natural gases. These are forms of the stored solar energy. These are forms of stored solar energy, and these are synthesized by the process of the photosynthesis millions of years ago. तो यहाँ पर बेटे हमने significance जो है वो हमने किस चीज़ का कर लिया है, photosynthesis का कर लिया है। अब हम इसी से related एक main जो topic करेंगे, that is what is the difference between ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हीटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहेगा, और वो जो आपका टॉपिक है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हीटोट्रॉप्स। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। इसको इजीली कर सकते हैं बेटे, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो एग्जाम्स में भी आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स एंड हियर इट इज द हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज इन दिस प्रोसेस organisms they can synthesize their own food themselves in the presence of sunlight, and that concept is known as autotrophs, and they do not depend upon others for their food, whereas in case of the heterotrophs they totally depend upon others for their food. So this is the first important difference between the autotrophs and the heterotrophs. So they are able to manufacture their own food. Autotrophs क्या है? They are able to manufacture their own food. They are able to manufacture their own food. अगर हम heterotrophs के केस में देखें बेटे तो they are unable to manufacture their own so this is the first difference between the autotrophs and the heterotrophs. अब हम सेकेंड डिफरेंस पे जाएंगे बेटे, रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। इट रिक्वायर्ड synthesis of organic food. नोट कर सकते हो बेटे, required synthesis of organic food. Required synthesis of organic food. Source of energy is organic food. यहाँ पर source of energy is organic
फूड। यहाँ पर जो सोर्स है बेटे एनर्जी का, that is the organic food in case of the heterotrophs, whereas in case of the autotrophs it requires synthesis of the organic food, whereas in case of the heterotrophs source of energy is the organic food। यहाँ पर जो source है आपका एनर्जी का, that is the organic food, external source not required, इसमें कोई external source की जरूरत नहीं होती है, external source not required। ये सेकेंड डिफरेंस हो गया बेटे, एक्सटर्नल सोर्स नॉट रिक्वायर्ड। अब हम यहाँ कह रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी इज द ऑर्गेनिक फूड एंड एक्सटर्नल सोर्स नॉट रिक्वायर्ड, एंड इन केस ऑफ द autotrophs required synthesis of the organic food, and the third difference is live in organic medium, it lives in the organic medium, lives in, जो आपके autotrophs है they lives in the organic medium, they lives in the organic medium, whereas in case of the heterotrophs lives in contact with organic medium, ये lives in contact, इनको ऑर्गेनिक मीडियम के कांटेक्ट में रहकर जीना पड़ता है, लिव्स इन कांटेक्ट विद ऑर्गेनिक मीडियम। तो यहां देख सकते हैं बेटे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉप्स एंड द हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो थे दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, दे डोंट डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड्स, whereas in heterotrophs they are unable to manufacture their own food, they totally depends upon others for their food. Next is required synthesis of the organic food in case of the autotrophs, whereas in case of the heterotrophs source of energy is the organic food and external source is not to be required by the heterotrophs. Third one is the autotrophs they lives in the organic medium, whereas in case of the heterotrophs lives in contact with the organic medium, ये organic medium के contact के साथ ये क्या करते हैं, live करते हैं। So these are the three differences between the autotrophs and the heterotrophs. Next बेटे आप हम थोड़ा सा करेंगे learning plus के बारे में। learning plus इस point of view से कुछ जो important हमारे learning plus points हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। learning plus लर्निंग प्लस पॉइंट, पहला हमारा पॉइंट है बेटे क्लोरोफिल गेट्स एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फर्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल गेट एक्साइटेड, क्लोरोफिल गेट एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight। नोट करें बेटे इसको, क्लोरोफिल गेट एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight and initiates the process of photosynthesis, and initiates the process of photosynthesis. So this is the first learning point, photosynthesis. So chlorophyll gets excited in the presence of sunlight or light, and after that it initiates the process of the photosynthesis। क्योंकि photosynthesis की process के लिए chlorophyll और light का होना बहुत ज़रूरी है। Without chlorophyll and light, the process of the photosynthesis it does not take place. So for the process of the photosynthesis, light as well as chlorophyll is to be must। ये फर्स्ट हमारा लर्निंग प्लस पॉइंट हो गया बेटे। हम सेकंड लर्निंग प्लस पॉइंट पर जो जाएंगे बेटे वो क्या होगा, लाइट इज एमिटेड इन द पॉकेट्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज एमिटेड इन द पॉकेट्स ऑफ एनर्जी। Light is emitted in the pockets of energy, and that pockets of energy is called photons। Light of energy is emitted in the pockets of energy, and that pockets of energy is called photons। So this is the second learning plus point। Next is the splitting of water molecules in the presence of light। The splitting of
the splitting of water molecules देखिए बेटे, the splitting of water molecules in the presence of light, in the presence of light is called photolysis. Is called photolysis. The splitting of water molecules. Water molecules को split करना, break down करना. The splitting of the water molecules, especially in the presence of light, and that process is called as photolysis. This is the third key learning plus point related with this chapter. Next हम करेंगे ATP is energy currency. ATP is energy currency. ATP, the full form of ATP is adenosine triphosphate. यहाँ पर बेटे अब हमने कौन कौन से लर्निंग प्लस पॉइंट पढ़े हैं. पहला है हमारा कि क्लोरोफिल गेट एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड आफ्टर दैट इट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सेकंड वन इज लाइट इज emitted in the presence of light is emitted in the forms of the pockets of energy, and that pockets of energy is called as photolysis. Next is the splitting of water molecules, especially in the presence of light, and that process is called as photolysis. जिस प्रोसेस में हम वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करते हैं स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एंड दैट कंसेप्ट और दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस. आफ्टर दैट एटीपी इज द मेन एनर्जी करेंसी फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. नेक्स्ट अब हम अगला जो लर्निंग प्लस पॉइंट पढ़ेंगे बेटे इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्या है कि ब्लू एंड रेड लाइट स्पेक्ट्रम. ब्लू and red light, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है बेटे, दैट इज रिलेटेड विद द लर्निंग प्लस. ब्लू एंड रेड लाइट स्पेक्ट्रम, ब्लू एंड रेड लाइट स्पेक्ट्रम are best for the process of photosynthesis. क्योंकि अगर ब्लू और रेड लाइट स्पेक्ट्रम नहीं होगा, आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस नॉट टू बी, हो सकती है कि उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ब्लू और रेड लाइट की एब्सेंस में जो है वो पॉसिबल नहीं है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो वो स्मूथली हो सके. अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बेटे मैंने आपको कहा था, सपोज दिस इज द सन, और सन की रेज क्या होती है बेटे, वो कहाँ पर गिरती हैं, दिस इज द सन एंड दीज आर द रेज ऑफ द सनलाइट. These are the rays of the sunlight, and these rays of sunlight they directly fall on the green plants. अभी किसके ऊपर गिरती हैं, आपकी ग्रीन प्लांट्स के ऊपर गिरती हैं. These are the green plants, and these green plants they easily capture the rays of the sunlight, and after that they form their food in the form of carbon dioxide plus water, and this is the raw material. After that there is the formation of carbohydrate. Carbohydrate is not to be stored immediately by the plants. Carbohydrate is not to be stored immediately by the plants, and after that it is to be stored in the form of starch. क्योंकि carbohydrate जो है वो it is not to be immediately stored by the plants. After that it is to be stored in the form of starch. It is not
stored immediately. It is not stored immediately by the plants. So after that it is to be stored in the form of starch. किस फॉर्म में स्टोर होता है? It is to be stored in the form of starch. Form of starch. Whereas in case of the human beings, food is to be stored in the form of glycogen. In the case of human beings, food is stored in the form of glycogen. Stored in the form of glycogen. So food is not to be stored immediately by the plants, but it is to be stored in the form of starch, whereas in case of the human beings, food is stored in the form of glycogen. तो ये बच्चे हमारे कुछ लर्निंग प्लस पॉइंट्स थे दैट इज रिलेटेड विद दिस चैप्टर. और आज हमने जो डिस्कस किया है बायोलॉजी पार्ट रिगार्डिंग द 10th क्लास, और जो चैप्टर था दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, एंड टुडे वी विल डिस्कस पार्ट 3 रिगार्डिंग दिस चैप्टर. और उस पार्ट 3 में जो आज हमने डिस्कस किया वो कि हमने कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है और जो सिग्निफिकेंस है फोटोसिंथेसिस का वो क्या है. और उसके बाद हमने क्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉप्स एंड द हेटेरोट्रॉप्स. आफ्टर दैट देयर आर सम इंपॉर्टेंट लर्निंग प्लस पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड विद दिस टॉपिक, दैट इज द फोटोसिंथेसिस. तो उससे रिलेटेड आज हमने ये कुछ जो है की पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, तो आप बेटे इनको अच्छे से नोट कर लिए. नेक्स्ट जो हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट विल बी कंटिन्यू विद इन अवर पार्ट नंबर 4. उसको हम पार्ट नंबर 4 में जो है वो कंटिन्यू करेंगे. अब एग्जाम्स के लिए भी बेटे समय बहुत कम रह गया है. फ्रॉम 26 फरवरी 2024 से मैक्सिमम सभी बोर्ड क्लासेस के जो है वो एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं. सो सभी के लिए बेस्ट विशेज हैं आपके फाइनल एग्जामिनेशंस की, और फाइनल एग्जामिनेशन की जो है वो आप बिल्कुल डेडिकेशन और डिवोशन के साथ जो है वो अपनी तैयारी करें. नेक्स्ट वी विल मीट अगेन विद आवर न्यू लेक्चर in our part number 4, and the chapter is that is life processes.